Topsy-turvy it was vintage cricket as well, as India looking to get one test match back in after losing in Bengaluru and Pune. Here in what was the traditional home of Indian cricket in Mumbai, not too far from the Brabant Stadium at the Wankhede. We all enjoyed the cricket yesterday and our camera crew were outstanding yesterday. A sunset to match the play. We expect a little bit more of that today as we assemble for day 2 of this third test match in the IDFC First Bank Series at the Wankhede Stadium. It was a rapidly moving day 1. 321 runs were scored, 14 wickets fell. What can we expect at the start of day 2? New Zealand haven't conceded an inch. India clawing their way back. There's so much to play for. Wasn't easy yesterday, a bit uncomfortable watching cricket with all. They were all very serious, going about their business in their own way. So absolutely, there's a lot to play for. There's the World Test Championship finals. You just think of it, 2 test match losses and suddenly India has lost 10 or more than 10 points on that table. So first ball. Run straight away, the man was on the onside, is hit it to the off. You mentioned Tom Latham, I think he'd be disappointed with the tossed up volley. And he does that again. He's toyed with the first 2 deliveries here. This time, excellent use of the feet. And in 2 balls, we've got a snapshot of Rishabh Pant, the player. God! Just a bit in the air, that one. I mean, no captain, no bowl. That's it. Runs coming from elsewhere. Not with the same authority as the first 2 boundaries. Was it the line? Brilliant. 12 of that first over, 98 for 4. you showed this delivery which runs in the morning for different. He'll bowl straight, Matt Henry. He'll bowl within himself. It's another warm day. Nice drive, but well cut off. The previous delivery to Rishabh Pant, I just want to have a... You can see why he's gone to Matt Henry first. The more experienced both. We'll come back to that engrossing story in a moment. Hot, humid, occasionally uncomfortable, but they love their game. They love watching cricket. They love the ebbs and flows. Oh, cheers! It's not as engrossing as you've all made it out to be. The point. Well, Ish Sodhi is, well, he's limbering up now as we speak. It was just great shot, terrific shot, inside out. Not now. 4.72 runs per over. That was close, but I just think it was getting away on him too much to use Sodhi. 103 for 4. 31 degrees. We'll get to a high of 37 already. 31. I saw this in Bengaluru. He put the helmet on and came up to the stumps. And somebody like Ish Sodhi, if he's not a regular and if you've picked him in the play, and that was partially stopped by Sodhi, so a boundary turns into just a couple as such. That's a beautiful shot for 1. Really well fielded too, Rachin Ravindra. India look in a mood this morning. They look in a power. And Virat Kohli thought that he could make it, but he didn't. 108. There is Rishabh Pant for you. Nobody writes his scripts. Catch it! Is it a couple? Catch it, Yangi! Innings. Go!
Jesse! You always sense, we saw that when Santner was... Gorgeous! He's a very eye-catching player. They will come back for a second and stroll through for a second. Man in the deep already having a fit. The bounce, I just wonder if it took him a little bit by surprise. There were two people back. Was good. 25 तरह की शुरुआत और आते साथ ही जो 3 चौके ऋषभ पंत ने लगाए थे तो उससे भारतीय टीम को और इसी का फायदा दोनों ही खिलाड़ियों को मिलता हो. दोनों ही खिलाड़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैटिंग कर रहे हैं. भारत को जरूरत है. खराब स्ट्रोक खेलकर आउट हुए वहां पर और ये फिर एक बढ़िया स्ट्रोक वहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से निकलता. मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी से रोक पाएगा गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए. ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है. आप जानते हैं कि आप बल्ले के ऊपर गेंद के ऊपर आए हैं और स्ट्रोक खेल. भारत 109 रन पीछे है. 126 4 विकेट नुकसान पर और यशवी जायसवाल इतना अच्छा खेल रहे थे और ये जो खराब स्ट्रोक खेल के आउट हुए इतने बड़े खिलाड़ी हैं. हम सब बात करते हैं ऋषभ. फिलहाल तो यहाँ पर स्वागत किया है शुभमन गिल ने क्योंकि स्ट्राइक पर गिल थे लेकिन कैच दिया जरूर था लेकिन वो पकड़ नहीं पाए. पूरी तरह से गेंद की लंबाई और ऊंचाई में सामंजस्य नहीं रख पाए थे. पहले जो घाटा है पहली पारी का उसे पूरा करना और उसके बाद फिर बढ़त लेना. अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी. अच्छा खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी. ये ऊपर भारत के खेल के बारे में भी टर्न हुई वहां पर हल्का सा बाउंस भी था उसे खेला. यहां पर गेंद 4 रन के लिए जाएगी शर्तिया. वैसे भी एजाज पटेल में वो पैनापन आज देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह की गेंद. फिर एक बढ़िया स्ट्रोक खेला. बॉल जो पूरे ऊपर आया और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए. और हालांकि हमने जो पिछला स्ट्रोक देखा था वो थोड़ा सा 50% रिस्क वाला था. रिवर्स स्वीप पे 4 के विकेट कीपर आया है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड साहब खेलिए. अच्छे स्ट्रोक्स के लिए वो ज्यादा अच्छी बात है. और अगर साझेदारी बहुत जरूरी है. एक और खूबसूरत शॉट. बेहतरीन चौका ऋषभ पंत के बल्ले से निकलता हुआ. ग्लेन फिलिप्स ऋषभ पंत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 30 गेंदों पर सीरीज में भारत के लिए काफी अच्छी पारियां खेल चुके हैं और भारत को उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में भी बॉलर को सेकंड फिर इसे प्लेस किया था. ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड किया गया और ऋषभ पंत फिर शॉट ऑफ लेंगे निकाल दिया मिड विकेट की तरफ. देखने का फील्ड इसको रोक पाए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए और खूबसूरत 4 रन वहां पर अर्जित करते हुए. और इसके साथ ही भारत के 150 रन पूरे हुए. 151 4 विकेट नुकसान पर 29 ओवर की समाप्ति के बाद पहली बार गेंदबाजी के लिए बाहर काफी ऑफ के बाहर गेंद आएगी. उसे ड्राइव किया जाता है. फील्ड किया जाएगा. चैपमैन थे वहां पर. एक रन से नहीं रोक पाले बल्लेबाज को और इसका चश्मा लगाकर मैच का आनंद लेते हुए उसे ऑन ड्राइव किया और अर्धशतक पूरा किया. 36 गेंदों पर 50 रन. लाजवाब बल्लेबाजी और सभी दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया है. सबसे अच्छी बात यह है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतरे हैं. ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए. जारी रखना होगा. पूरा सम्मान देते हुए इस गेंद को रक्षात्मक करते हैं. उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर श्रीलंका में. न्यूजीलैंड 2-0 से हार कर यहाँ पर आया था तो ऐसा और वैसे समय में जब इस तरह की बल्लेबाजी हो रही अपील हुई थी हल्की सी. That's what you got to expect with Sodhi. Every now and then a long hop. Turning down. Yeah, the control you talked about that New Zealand had. Catch! Just thinking about that, what you said, that he should be used. Oi!
spins across the face. Oh, Jay! Here's the ball, Jay! Oh, Jay! It's 163. I remember you saying, Smithy, last evening. This half tracker that Rishabh Pant has Henry does a good job behind point. Go, Jay! He was always going to come, wasn't he? And he gets away with it. It was not well timed. As always, Glenn Phillips very... Down, G! He's the dancing Rishabh Pant. He's... This is also something which Daryl Mitchell employed right through his and used quite quickly by Shubman Gill to make that change and use it in a different test match. हिंदी कमेंट्री में मैं हूं आपके साथ शबाब अनवर, मेरे साथ परवीन सोनी जी। धन्यवाद शादाब। न्यूजीलैंड को लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। नहीं थी जो कैच और वो कैच ड्रॉप हुआ था, भारत के लिए एक अच्छी बात थी। अंकुश लगाया है इन दोनों बैटर ने। बिल्कुल ये अंकुश तो लगाया है कि 42 गेंदें होगी कोई लास्ट बाउंड्री आने से, क्योंकि लगभग 7 ओवर खेल हो चुका है भारत में। ग्लेन फिलिप्स का दिन ही खराब है। पर कोई कैच छूटे, यहाँ पर गैप तलाश किया है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। पद के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका काफी देर के बाद शतकीय साझेदारी के करीब। ये यहाँ पर जोरदार अपील हुई है। क्या सोढ़ी को मिल रही है सफलता? अंपायर ने कहा है जी हाँ। DRS टाइमर ऑन हो गया है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। Impact in line. In the wickets, umpire's call. बहुत ही दुर्भाग्यशाली वहां पर आउट हुए। Go back to Michael's original decision अंपायर ने आउट करार दिया था। गेंद काफी टर्न हो रही थी और संभवतः लेक्सन को छोड़ती, क्योंकि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। हमें 55 रन दूर है भारत न्यूजीलैंड की पहली पारी से। और यहाँ पर फिर उसे गेंद को क्लाइव का उपयोग किया अंतिम समय में और गेंद को निकाल दिया वहां पर मिड विकेट। न्यूजीलैंड की पारी का स्कोर बराबर नहीं हो जाता। एक ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल करना इसी बल्लेबाजी को और मजबूत है। और कि भारत की ये जोड़ी न्यूजीलैंड के स्कोर मजबूत हो जाए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलिप्स और ईशोड़ी, और भारत को लेंथ से पहले जाएंगे तो आपके अंदर एक जो मनोबल होगा, आत्मविश्वास होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। यह बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ खेलना है। लेकिन उसके बदले में अगर आप यहाँ पर खेल के जाते हैं और 2 मैच भी अगर खेलते हैं और बीसीसीआई आपको परमिशन दे देता है। और जब से भारतीय टीम की जर्सी पहनकर स्टेडियम में आने का चलन बढ़ा है, ये देखिए 18 नंबर की जर्सी भी नजर आ रही है। 18 finger spinners were the biggest threat, and that's where we are then at lunch on day 2. There's already been 15 wickets in this game. Pant 60, the standout innings today. Shubman Gill, Ravi talked about the life that he had, but around. And as we're going to start this lunch session, plenty of batting for India to come. New Zealand, on the other hand, would have gone into the break More. Then they dropped. some bounce from length. And you can see the reluctance in defence in the next ball. Not sure whether it's coming back in or turning. When I say one, oh, gone. Glenn Phillips, as always.
Sarfaraz Khan. Got it. A real good ball at the start of his innings for Sarfaraz. Nicked one straight to Tom Blundell, who holds on to it. Step out and going downtown. Didn't do it to good effect before lunch, but post lunch, a lovely shot to get India's first bound. Full ball. Gets to the boundary. The second. The reverse sweep employed straight away. Washington Sundar this time. Make note, that was his first ball. And the first boundary as well. Nicely played, in fact. Just playing down the line, we heard. There it goes. Another one. Just shoots down from length. Lucky for. कन्वर्ट करे, केवल 10 रन दूर है वहां पर। और ये देखिए फिर जिस बात का हमें डर था वही हुआ और बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई और शुभमन गिल थोड़ा कैजुअली खेल गए वहां पर और भारत को लगने वाला 8वां झटका। सब निराश वहां पर और खुद शुभमन गिल भी खिलाफ भी शानदार शतक लगाया था। बहुत आसानी से अपना विकेट नहीं देते हैं और अगर वो थोड़ा सा साथ देंगे वाशिंगटन। 12 टेस्ट विकेट ले चुके हैं एजाज पटेल। एक विकेट मिला है फास्ट बॉलर्स को और ये हवा में खेल दिया गया स्ट्रोक बहुत बढ़िया तरीके गैप में खेला है। देखना है कि अंपायर के इशारे का इंतजार हो गया क्या। 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर गया, 4 रन का इशारा तो अंपायर का और केवल 4 रन दूर है बाहर। Mixed it up nicely, just like the previous one. What a shot! He was there, and he's being stumped. Great, lovely shot, and that is what you get from Washington Sundar. No half measures, plays a clean enough shot, and goes all the way for 6. On that. Oh, straight into the hands. Once again, nicely tossed up, nicely bowled. The ball curving into the right-hander, and a fifer for Ejaz. So in 3 innings, cuts and cuts well. He split the field and gets the boundary. And the 250 comes up. It's in the air and clears the ground. That's a terrific shot. Such a good bat speed. Indies. What he was going to do with. That's a fine shot. Cracking shot there. Showing some real potential here. 30. 2 is the call. You have to settle for a single here. So India all out for 263 and Ejaz Patel, having taken 10 wickets in an innings 3 years ago, has now captured 5 wickets in this innings. Straight away. So Akashdeep has his cap off, so he'll start the proceedings. Very important you don't give away easy runs, especially with the new ball. So Latham and Conway. Don't need the umpire. He's crashed through the defence of Tom Latham. And have a look at the out to the centre. Akashdeep इस पर भी बात जारी करेंगे ऑन साइड की तरफ। यहाँ पर टाइमिंग भरपूर, खाली क्षेत्र में मिलेंगे 4 और इस 4 रन से कॉनवे का निश्चित तौर पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। खराब लाइन डाल बैठे थे, आगे की तरफ बैट्समैन ने से रोका। यहाँ पर भी बढ़िया गेंद, सर पे हाथ रख लिए, यहाँ गैप मिल जाएगा, पीछे है जरूर फील्डर लेकिन खराब लाइन, रन्स मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रन ये न्यूजीलैंड के नजरिए से, रोकने का प्रयास जरूर आकाशदीप का लेकिन काफी नहीं, निकल जाए गेंद बाउंड्री के लिए। 4 It could be 5. 1, 2, 3, 4. I've got 5. I've got 4. Well, beautifully bowled, big appeal, but was the ball doing enough? Was it coming in enough? My first impression was even impact was outside off. Well, they were tested. You would expect that. India fighting for their World Test Championship life here. They are desperate.
for some success. I'm not sure that hit anything at all. It's gonna. This time he's gone though, and it's Washington Sundar again. He just can't stay out of the action. Nice catch. How about that from Rachin Ravindra? Gone! Beautiful piece of bowling, some rash batting, and the old combo. Punt and Ashwin. तो न्यूजीलैंड के पास इस समय 16 रन की है और डैरल मिचेल आए हैं इस समय क्रीज पर और